Good evening, vanakkam, namaskaram, sat sri akal, everything, and welcome to Gana Shot. Uh, Today we are going to talk of nuclear dynamics of a collapsing Pakistan. Right? We all know that Pakistan is a nuclear state, and it is on the verge of collapse. And to talk about it and to take us through what the whole story is, I have the honor of hosting General P.R. Kumar. Sir, welcome, good evening, and welcome to this critical Thank you program so much, on. Shankar. It's an honor and privilege to be back. And as viewers must know that both of us are very, very old-time friends from National Defense Academy. We both are gunners. Shankar, of course, was the retired as the Director General of Artillery. Uh, amongst all my contemporaries, he was a whiz and one of the brains behind everything. And it's splendid to see you moving from strength to strength. Oh, And I must thank. compliment you for the series which you are conducting. I'm aware you did the entire Pakistan, switch to China, but events which are happening in Pakistan has drawn you back to Pakistan, and rightly so. And thank you for having me on this show. Oh, thanks a lot, sir. Just to tell all the viewers, General Kumar was my senior. He was a senior colonel commandant when I was the Director General of Artillery, and more importantly, he was the Director General of Aviation, and even more importantly, he was the Director General of Military Operations of the Indian Army. Right? And of course, having commanded a corps and all that, we could not have had anyone better than him to Thank talk you. to us and explain to us the nuclear dynamics of a collapsing Pakistan. Look, it's important. There is a nuclear dynamics and the state is collapsing. Right? We have many models to think of everything. But sir, before that, if you could give us an idea about what Pakistan, its nuclear issues, and all that before we get into details. Just give your opening views and then we'll take it on. All right. As all of us are aware, that there are only the nuclear club is exclusive as of now. There are only 9 countries. Very quickly, the big three: US, Russia, China, UK, France, India, Pakistan, North Korea, and Israel. If you see, very interestingly, it does not follow a pattern of the escalatory power matrix. Apart from the big three, others are just, you cannot say just because they are global powers, they have become nuclear powers. There have been various international reasons, geopolitical considerations, especially China wants to become a superpower, he joined in. India felt the whole thing was absolutely discriminatory, and we have ambitions of being a big power. At this moment, I must compliment our national leaders in 1947 and onwards that they never succumbed to the nuclear non-proliferation treaty, and that is why we are apart. Pakistan has always been arch rival of India. They have become a nuclear power only because of India. Having said that, even before the incidents in Pakistan had taken center stage, one point I want to make clear that with the entire every nuclear agreement has been discarded and done away with. Today, the world has no nuclear agreement. As it is, it's an extremely dangerous place with the Ukraine war ongoing, which is actually a cold war between West and NATO, led by USA, and Ukraine with Russia on the other side. As it is, there was a very high probability of something being charged and where we could have sparked some sort of a start of a nuclear conflagration. But with this, I feel that while everybody has been watching the TV and in a way taking some nefarious pleasure out of a very, if it was not a tragedy, it would actually be a comic, tragic comedy of a TV show of what all is happening in Pakistan. But the discerning, serious international citizens, the heads of all the big nations, the national security advisors, especially of USA, China, of India, are extremely concerned of the nuclear dimension of Pakistan in the current situation. Are the nuclear weapons or the nukes safe in Pakistan? And I Yeah, think I think I must compliment you for this very, very strategic and important topic which has geopolitical ramifications. thanks a lot, sir. What we'll do is
you asked the question: are the nuclear weapons of Pakistan safe in the current crisis? So let me outline the current crisis, and then we'll see as to why you need to make them safe or how unsafe or whatever they are, and then we'll see the magnitude of the problem. So I will run you through a couple of slides which will explain to us where it is. We all know in Pakistan, over the past, say, 1 week, from 9th of May onwards, not even a week, we're hardly in the third, fourth day, there's a clear, divide in the polity of Pakistan. The army, the PDM, the current ruling dispensation, and the election commission is on one side. On the other side is the PTI with Imran Khan and the president, and the judiciary is somewhere in between, and it is more leaning towards the PTI as of today. And that's what at least the army and the PDMs feel. We all know that all the drama which surrounded Imran Khan going home and not giving bail, all that, I'll not go through that. Many people think that it was a victory for Imran Khan and army is finished and all that. I think nothing can be further than the truth there. Things are on. If you go into Pak media, both sides are still unrelenting. But like I said, what is the current status? That's the issue. Now, I'll not say what the current status is, right? Because if whatever you and I say is an assessment from a far removed assessment, so we need to have an idea from someone who's from within, right? Uh, so let me see what Parvez Hoodboy has written today in Dawn. He says Pakistan's mad rush towards the cliff edge. He uses this word cliff edge. और ये बोलते हैं कि इट्स एविडेंट प्रोक्लिविटी फॉर कलेक्टिव सुसाइड डिजर्व्स अ डायग्नोसिस. उसको वी नीड टू देखना पड़ेगा कि क्या है, फॉलोड बाय थेरेपी. इसका थेरेपी के बारे में बहुत बात करते हैं. कॉन्ट्ररी टू व्हाट many people want to believe, this pathological condition is not one man's fault and it didn't develop suddenly. ये सिर्फ आप इमरान खान के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हो, ये और ये अचानक नहीं आया, ये प्रॉब्लम ये काफी दिन से आया है. ये भी बोलते हैं कि इमरान खान स्टार्टेड द रॉट इन 2014, जब इन्होंने कंटेनर कंटेनर के ऊपर बैठ के और बाकी उसके पॉलिटिकल अपोनेंट्स को गाली गलौज दे रहे थे, राइट? और सालों तक इनके लिए उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स को सिर्फ चोर और डाकू बोलते थे. आज भी वही बोल रहे हैं, राइट? इंपोर्टेड सरकार, चोर, डाकू, यही बोलते हैं. बट he says the shoe is now on the other foot. Okay, and Khan's enemies have been no less inductive, abusive, and unprincipled. वही कर रहे हैं जो खान साहब कर रहे थे, right? और ये भी उन्होंने बोल दिया कि they have presented plausible evidence that Mr. Clean has swindled billions in the Al Qadir and Toshakana cases. आज तक खान साहब ये पाकिस्तान की पब्लिक नहीं मानती है, उसके सपोर्ट है. पर बात यह है कि इन्होंने किया है, और क्योंकि ये पाकिस्तान में तो हर आदमी ये करता ही है. आर्मी, ये बोलते हैं कि आर्मी इज मेड फॉर शील्डिंग द कंट्री फ्रॉम व्हाट इज आउटसाइड. पर क्या है कि ये इट हैज इंट्रूडेड इनटू द इंटीरियर. ये अंदरूनी इलाकों में दखल अंदाज कर रहा है, ये तो हमें सबको पता है, पर ये बोल रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर नॉट एक्सेप्टेबल. इनको ये हर वक्त ये इलेक्शन को रिग करेंगे, और आज दशक से यही करते आ रहे हैं. एंड दे हैव अनकॉन्स्टिट्यूशनली इंटरफियर्ड इन द पॉलिटिक्स. ये इनका आज का दिन का है, ये जो सदियों से चला आ रहा है इनका, राइट? रनिंग द इकोनॉमी एंड मेकिंग DHS, डिफेंस हाउसिंग accommodation, is also not the army's job. Officers are trained for running, not trained for running airlines, sugar mills, fertilizer factories, insurance, advertising companies, and special exemptions and loopholes have been given. इसका मतलब ये आर्मी जो है देश को बचाने के अलावा सब कुछ कर रहा है. Okay, a decisive role in national politics, whether overt or covert, was sought for personal enrichment of individuals. इसका मतलब ये पूरा जो झगड़ा हो रहा है, ये पैसा का खेल है. ये पैसा का खेल है, पैसा का लालच है बिटवीन द आर्मी, इमरान खान एंड PDM. Okay. When the people stormed the GHQ in Rawalpindi and attacked an ISI facility in Pindi and set up as the Corps Commander's house in Lahore, they did the unimaginable, right?
by piquing everyone's curiosity, no tanks confronted the enraged mobs. ये बोलते हैं कि भाई ये तो किसी ने उसको mobs को रोका ही नहीं. No self defense was visible on social media. The bemused Baloch asked, what if the army facility had been attacked in Quetta or Gwadar? Would there be a red carpet bombing or artillery barrages? तो मतलब फौज क्या डरा हुआ है, अनश्योर है, तो ये प्रॉब्लम है. A strong country pulls through natural disasters or survives COVID-19 and events like the Ukraine war. A weak one relies on friends in the neighborhood like China, Saudi Arabia, and UAE, and dialing 3 letters I, M, and F. ठीक है, ये मतलब इतना वीक हो गया पाकिस्तान आज के दिन. More importantly, draconian social controls through schools and an ideology-centered curriculum cripples young minds, crushing independent thought and reasoning abilities. Leaders of both PTI and PDM agree that this must never change. इनका कोई इरादा नहीं है कि ये चेंज करे, ये जारी होना चाहिए दोनों तरफ से. तो ये है हालत इस देश का. The prognosis, it is hard to see much good coming out of a screeching catfight between rapacious rivals thirsting for power and revenge. None have a positive agenda for the country. ये दोनों जिस तरीके से देश को धकेल रहे हैं खड्डे के अंदर, ये काफी जाहिर है. While the much feared second breakup of Pakistan is not going to happen, ये last point है, बहुत important है. The downward descent will accelerate as the poor starve, cities become increasingly unlivable, and the rich flee westwards. इसका मतलब पाकिस्तान जो है वो अनार्की की तरफ जा रहा है, राइट? तो ये प्रॉब्लम है जो इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि एक्चुअल क्राइसिस क्या है पाकिस्तान के अंदर. और इन्होंने लास्ट 2 सेंटेंस में ये बताया ये क्राइसिस रिवर्स नहीं होने वाला है, राइट? ये डॉन का आर्टिकल है, डॉन का एडिटोरियल में लिखा है, द unusually aggressive reaction from the military in response to the vandalism of its facilities, bolstered by the unanimous condemnation from government leaders, suggests that the PTI might soon face a serious existential challenge. इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम और इंस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ने वाला है. अगर आप आज का जो भी इनका लीडर्स का जो स्टेटमेंट्स हुए हैं, आए हैं उनके मीडिया के ऊपर, ये जाहिर करता है कि चंद ही दिनों में कुछ और एक्शन होने वाला है. बिल्कुल, राइट? अभी क्या है कि पाकिस्तान आर्मी उस कगार में आके खड़ा हो गया, जब अगर वो कुछ नहीं लेंगे तो उनका पूरा कारोबार, पैसा, पावर, सब कुछ इट इज ऑन द दाव पे खड़ा है. वो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? भले ही आप कुछ भी बोल दो कि इनके अंदर दरार है, ये है, वो है, पर आखिर सारे मिले हुए चोर हैं, ठीक? पैसा लुटाने. ये हुड बॉय भी यही बोल रहा है. तो आगे अस्थिरता कायम है. तो इस माहौल में, ठीक, एक सवाल होता है, ये क्राइसिस क्या ऐसा है कि इनका न्यूक्लियर वेपन्स सुरक्षित है या नहीं है? जो आपने सवाल उठाया, यही सवाल मैं भी पूछ रहा हूं. अगर इस देश के अंदर इनका जो परमाणु हथियार या परमाणु फैसिलिटी सुरक्षित नहीं है, तो बाकी दुनिया के लिए खतरा है, इसमें दो राय नहीं है, और ये सब बोल चुके हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे आज के ऑर्गेनाइज तरीके से इसका विश्लेषण करेंगे. सबसे पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप बताएं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन्स और उनका प्रोग्राम और एक ओवरव्यू दें. और आपने मेरे को कुछ स्लाइड्स भेजा है, उसी स्लाइड्स को मैं पहले से शुरू करता हूं. उससे पहले यदि आप इजाजत दें तो 2 पॉइंट सिचुएशन के ऊपर बोलना चाहता हूं. बोलिए. एक अंग्रेजी में कहावत है, द लल बिफोर द स्टॉर्म, यानी कि जब कुछ बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण होने वाला है उससे पहले शांति होती है. पर यहाँ जो पाकिस्तान का हालत थोड़ा सा अलग है. एक स्टॉर्म, एक टाइफून ऑलरेडी गुजर गया है और दूसरा बिल्कुल नदी के तट पे है. वो वार्निंग आ चुका है. यदि आप देखेंगे कि पहले 72 आवर्स के बाद थोड़ा सा मॉब फ्रेंसी,
लिटिल बिट ऑफ एक्शन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स, जुडिशियल एक्टिविज्म, सब कुछ हो रहा है जिसके बारे में आपने बहुत बताया है। आपके पिछले 3-4 इंटरैक्शंस में आपने बताया, उसको मेरे को दोहराने की जरूरत नहीं है। पर मैं ये स्पेशली बताना चाहता हूँ कि जो आगे वाला तूफान है वो पूरे पाकिस्तान को बदलाव में लाएगा, वो बहुत पिवटल है। और इसीलिए ये जो टॉपिक आपने बोला है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि थोड़ा सा गुड न्यूज़ ये भी है कि जो मर्जी हम पाकिस्तान को बोलें, जो भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट होता है उनको खुद मालूम है कि पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ जाएगी यदि, और अपने उनकी जो स्पेशल सोशल और पॉलिटिकल इंटरनल सिचुएशन को देखते हुए, अभी नहीं, जब से उनके पास परमाणु आए हैं, कि उनको स्पेशल केयर लेना चाहिए। और मैं शुरुआत में ही बोलना चाहता हूँ कि जैसे बाकी इंटरनेशनल न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, भारत है, यूएसए है, यूएसएसआर है, उनकी भी काफ़ी तगड़ी और अच्छी प्रोसीजर है जो हम आगे बताएंगे। अभी आगे चलते हैं आपके स्लाइड में। ये एक 2023 का स्लाइड है, इसके ऊपर जिक्र ज़्यादा नहीं करूँगा। आप देख सकते हैं कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में 90% परमाणु वेपन्स उनके पास हैं। अभी न्यूक्लियर जो इन्वेंट्री होता है फॉर जो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, ये खाली वॉरहेड नहीं होता है। वो इस जैसे कि अभी आर्टिलरी के ऑफिस, आर्टिलरी में क्या होता है, एक गन होता है और एक क्या बोलते हैं, एम्यूनिशन होता है। गन और एम्यूनिशन दोनों जुड़ के ही जाके टारगेट में गोला जाके लगता है। इसी तरह वॉरहेड के लिए डिलीवरी सिस्टम चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेंस चाहिए टारगेट के ऊपर। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। पर मैं ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान यदि आप देखेंगे, पहले तो ये फिगर्स एक्सेप्ट फॉर रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स, बाकी सारे 100% गारंटीड नहीं है, क्योंकि कोई भी 100% अपना अब दोस्त पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये नहीं बताएगा कि मेरे पास क्या क्या है। जो अभी डाटा आपके पास आपको पेश करेंगे उसके ऊपर 100% एक्सेप्ट फॉर यूएस एंड रशिया। यूएस एंड रशिया भी आस्ते आस्ते 100% गारंटी कम हो जाएगा, क्योंकि उनके पास एग्रीमेंट है, सॉल्ट और सॉल्ट 2 एंड सॉल्ट नाउ। उस एग्रीमेंट के तहत इंस्पेक्शन कर सकते हैं और उनको बताना चाहिए उनके पास क्या क्या है। कोल्ड वॉर एनिमीज हैं, ताकि एक दूसरे के ऊपर नजरअंदाज रखें जानबूझ के, जैसे ब्रिज कार्ड गेम है, दूसरे के पास क्या है वेपन वो बताना जरूरी है। इसी तरह न्यूक्लियर वेपन्स में अभी तक पिछले वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसलिए हमारे पास कोई लड़ाई नहीं हुई है, एक दूसरे को मालूम है दूसरे के पास क्या कर रहे हैं, और इस तरह से उन्होंने अपने आप को काबिल समझा, और इस तरह से एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लैग्रेशन या लड़ाई अभी तक नहीं हुई। आस्ते आस्ते चाइना आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये पूरी जो अरेंजमेंट है उसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आ गए हैं और ये काफी अनसेफ हो गया है। पाकिस्तान एक देश है, जैसे ये आपके पास सामने स्लाइड आया हुआ है, ये जो पिंक कलर में है ये बेसिकली न्यूक्लियर रिलेटेड मटेरियल बना रहा है, और जो रेड कलर स्लाइड है ये इसमें न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम, यानी कि मिसाइल्स, लॉन्चर्स, एयरक्राफ्ट, और सी शोर के पास इनका जो सबमरीन्स होंगे जिसके ऊपर ये मिसाइल्स वगैरह लोड करके वो एक्शन ले सकते हैं। इनके पास पाकिस्तान, आपको मालूम होगा, वो अपने आप को उनके पास ट्रायड कैपेबिलिटी अपने आप को कहते हैं कि हमारे पास तीनों हवाई जहाज से जैसे ये तीनों 170 बोलते हैं जैसे मैंने बोला। और आप देख सकते हैं कि डिलीवरी सिस्टम एयरक्राफ्ट मिराज 3 है, पर ये बहुत पुराने हो चुके हैं। उनके पास चाइना से नया J-17 आ रहे हैं, सुनने में आया है कि वो भी न्यूक्लियर इक्विप्ड हो जाएंगे। तब तक फाइनल होगा तो उनके पास 164 J-17 जहाज का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। इसके अलावा F-16 उनके पास हैं 36, पर अमेरिका के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो उसको छू नहीं सकते फॉर न्यूक्लियर डिलीवरी। बट बहुत सारे आर्टिकल और ऐसे रूमर्स फैले हुए हैं कि एटलीस्ट 3-4 F-16 उनके पास हैं इक्विप्ड जो न्यूक्लियर डिलीवरी कर सकते हैं। लैंड में उनके पास बेसिकली शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज
मिसाइल्स और रॉकेट्स हैं और क्रूज मिसाइल्स हैं। उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि जो 5,000 किलोमीटर से ज्यादा और 10,000 किलोमीटर से ज्यादा उनके पास कोई नहीं है। आपको खुशी होगी कि इंडिया अभी काफी केपेबल हो गया है, हमारे पास ट्रायड केपेबिलिटी भी है और आईसीबीएम की केपेबिलिटीज भी आ रही है। राइट। और पाकिस्तान तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज हम विल फोकस ऑन द सेफ्टी ऑफ दिस rather than their capability, right? ओके So on that, जो आपने एक और स्लाइड बनाया है वो उसको मैं आप बताइए कि हाँ। तो जब 2014 में एक रिपोर्ट लिखा था यूएस ने कि ये काफी केपेबल देश है, उनकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी सिस्टम अच्छी है, पर पिछले 7-8 साल से यूएस और पूरी दुनिया का रुख बदल गया है। ये आप एक रीसेंट स्टेटमेंट जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने अक्टूबर 22 में लिखा है कि पाकिस्तान में बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट एनी कोहेशन। इसका मतलब इनका जो कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके ऊपर शक है। और एक बाद में आएंगे, जनरल शंकर को इसके बारे में मालूम है, सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी हम बाद में बताएंगे, पर कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन जिससे इसके ऊपर काबू किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है, सेफ कीपिंग किया जाता है, यदि यही जो मेन ग्रिड है उसमें ही हमको शंका है, तो बाकी जो नेचुरल इनकी पाकिस्तान की अंदरूनी वल्नरेबिलिटीज हैं, आप समझ सकते हैं कि क्यों जरूरी है कि इसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए और वॉच रखना चाहिए। राइट। और तो इसका मतलब कि इनके पास तकरीबन 170 क्या बोलते हैं उसको, वॉरहेड्स हैं ऑफ वेरियस वैरायटीज, राइट, विद डिलीवरी सिस्टम्स। उसके अलावा इनके पास न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जहां ये न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल बनाते हैं, जैसे चश्मा हुआ, कुशब रिएक्टर हुआ, कानुक में हुआ, राइट, वगैरह वगैरह, जो हमने उस मैप में भी दिखाया। ओके, क्योंकि ये एक परमाणु हथियार देश है और काफी दिन से इनके पास ये परमाणु हथियार है, इनके पास कोई तो स्ट्रक्चर होगा सेफ्टी के लिए। ऐसी बात नहीं है कि सेफ्टी नहीं है, लोग सोचते हैं कि सेफ्टी और सेफगार्ड्स नहीं है, पर मेरे को पूरा यकीन है कि Pakistan has good safety systems, right? And it is not, we should not put it out. So I would like you to take us through this general thing. What is their outline safety mechanisms? मैं जनरल शंकर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जो आप लोगों को मन में रखने वाली बात है कि फॉर्चुनेटली हर एक 100% कोई गारंटी नहीं होता है, पर ज्यादातर हमको पाकिस्तान की जो जो वेपन्स हैं, डिलीवरी सिस्टम्स हैं और इवन फिसाइल मटेरियल हैं, वो कहाँ रखी हैं और कैसे सेफगार्ड्स हैं वो हमको मालूम है। दूसरी बात मैं जो अभी स्लाइड में नहीं है वो बताना चाहता हूँ, उनके पास फिसाइल मटेरियल यानी कि 90% यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम एंड प्लूटोनियम जो है उनके पास इतने हैं तकरीबन 300 और एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं। और एशले टेलिस जो हैं, जो बहुत ही कामयाब जियो स्ट्रेटेजिक, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग किताब लिखी है। इनकी किताब की नाम है स्ट्राइकिंग एसिमेट्रीज न्यूक्लियर ट्रांजिशन इन सदर्न एशिया। ये पूरे दुनिया में मशहूर हो गई है, स्पेशली इन साउथ एशिया। उन्होंने साफ बोला है कि लार्जेस्ट, मोस्ट डाइवर्सिफाइड एंड मोस्ट केपेबल न्यूक्लियर आर्सेनल पॉसिबल इज बीइंग बिल्ट बाय पाकिस्तान। आपको हैरानियत होगी ये सुन के, पर जब उनके पास पानी पीने के लिए, घास खाने के लिए भी पैसा नहीं है, इन्होंने अभी बढ़कर बोल रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल NIA ने बोला है कि अगले 10 साल में they will become the 4th largest nuclear country in terms of warheads, over 350, double of what India has। तो इनके ऊपर काबू रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी आप स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं। हमारा जो इनका जो स्ट्रक्चर है, जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं, एक फॉर्मल नेशनल कमांड अथॉरिटी है जिसका एटलीस्ट ऑन पेपर चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है, पर आप सब जानते हैं कि जो न्यूक्लियर, और ये सभी जानते हैं, एक रिसेंट किताब में और इवैल्यूएशन में भी बोला है कि इट इज मोस्ट अनलाइकली दैट द न्यूक्लियर ट्रिगर और द न्यूक्लियर बटन विल बी हेल्ड बाय एनी सिविलियन अथॉरिटी। इट विल ऑलवेज रिमेन
अंडर द रूल एंड द थंब ऑफ द मिलिट्री। पर इनकी जो स्टाफ, ये बहुत क्विकली मैं बता देता हूँ, 2 कमिटीज हैं, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है, एक एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल है, एक डेवलपमेंट कंट्रोल है। एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल सिविलियन हेड है, डेवलपमेंट कंट्रोल में बेसिकली आर्मी है। पर ये जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ग्रुप, जो अगला स्लाइड है वो आप देखेंगे, वो बेसिकली आर्मी के अंडर आता है। जैसे एक यहाँ भी चीज, आपने, एक सवाल है मेरा, और हाँ ये जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, आपने जो बताया आज के दिन, जैसे आपने बताया, और मैं ये सही है, और हालांकि इस स्लाइड के ऊपर ये दिखाया गया है कि चेयरमैन जो है प्राइम मिनिस्टर है, और राइट, और वो हमें भी पता है कि इसका फाइनल बटन जो है वो आर्मी के पास है, राइट। पर कल के दिन अगर जिस तरीके से इमरान खान साहब चल रहे हैं, राइट, और आर्मी दब रहा है, ठीक, क्या ये सिस्टम बदली हो सकता है? नहीं, बिल्कुल बदली हो सकता है, क्योंकि आप ये आपको ये बताना उस टाइम बताया नहीं मैंने कि न्यूक्लियर वेपन्स के साथ साथ इनके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। तो ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, इनकी रेंज 200 से लेकर, एक नजर करके एक वेपन सिस्टम है इसकी रेंज खाली 60 किलोमीटर है। और बहुत जनरली इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और अमेरिका को छोड़कर ज्यादातर ये वेपन को मेट नहीं करते हैं, मतलब जोड़ के नहीं रखते हैं। वॉरहेड और डिलीवरी सिस्टम अलग रहते हैं। पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स क्योंकि जल्द से जल्द एक टैक्टिकल और इमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल होना चाहिए, तो ये बहुत सारे लोगों में अफवाह है। और मेरे ख्याल से एज अ प्रोफेशनल सोल्जर मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इंडिया ने बहुत पहले, कुछ साल पहले एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था, कोल्ड स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट का ये मतलब है, जो पूरी दुनिया जानती है, ये ओपन सोर्स है, कि बहुत ही कम समय पर बिना बिल्डअप करते हुए इंडिया के रिसोर्सेस को मोबिलाइज करके लार्ज स्केल पाकिस्तान के ऊपर एक ऑपरेशन करें और मैक्सिमम शैलो एरिया को ग्रैब करें। उसके रेस्पॉन्स में उन्होंने बहुत सारा रीएडजस्टमेंट किया है फौज में। पर सबसे बड़ा रीएडजस्टमेंट उन्होंने ये किया है कि उन्होंने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को समझा कि ये उनके उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स में जो होना चाहिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पर इसका वल्नरेबिलिटी क्या है, इसका डेंजर क्या है? इसका एब्सोल्यूट डेंजर ये है कि ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पहले से मेटेड होंगे और आर्मी के पास होंगे, यहां तक कि आर्मी के हो सकता है कोर कमांडर लेवल डाउन तक होगा। तो फिर हो सकता है हीट ऑफ द बैटल में जो डिसीजन लेने वाला हाईएस्ट कमांड अथॉरिटी के अलावा लोएस्ट डिनोमिनेटर के पास चला जाएगा, जो जिनके ऊपर बिगर पिक्चर नहीं हो सकता है। So तो आप these सोच सकते हैं। नहीं, why, wait, let me interrupt you here, please. So what you're, आपने जो बोला है, इसमें 2 प्रॉब्लम्स आपने बता दिया, राइट। 1, अगर ये जो कल के दिन इमरान खान आए, जिस तरीके से लग रहा है कि वो आ जाएंगे, ये जो नेशनल कमांड अथॉरिटी में जो अथॉरिटी है वो चेंज हो जाएगा, पहली बात, राइट। क्योंकि ये इट the whole power will be with Imran Khan, and the army will have to come under him. पर जैसे ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो एक प्रॉब्लम उसके साथ वी हैव निपटना पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो किसी कोर कमांडर के पास हो सकता है। अगर कोई इंस्टेबिलिटी है तो इट इज व्हाट आप क्या बोल रहे हो कि a core commander might be tempted to use it. मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ, पर But हमने he देखा can be, है, possibility है ना? the probability is always there. Yeah, In any possibility. case, in any नहीं, case, जैसे आपने बोला, जैसे यूएस एक्सपर्ट्स और टेलिस ने भी बोलते हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन 60 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के इलाके में कोई फायदा ही नहीं है। ये बेसिकली डिफेंसिव वेपन है। नहीं, please wait, sir. Don't get into the tactics of the whole story. Okay. All I'm trying to put across to you is a simple point. The simple point I'm trying to put across is that there is a chance of a mistake happening. Absolutely. Irrespective of the probability, the possibility exists, right?
And in case the nation goes unstable, like it is going now, so someone might take the initiative. That's all I'm trying to put across. Okay. Absolutely. Now, if I Yeah, may, yeah, yeah. I mean, we'll just right. We'll okay. The next thing is, yeah, you have a go at this. जो मेन एग्जीक्यूटिव ब्रांच है न्यूक्लियर वेपन्स का पूरा प्लानिंग करना, डिप्लॉयमेंट करना, उसका देखभाल करना, उनका सिक्योरिटी करना, बोथ सिविल एंड मिलिट्री, वेदर इट इज द मटेरियल जिससे हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं या वो लॉन्चर और वॉरहेड जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डायरेक्टरेट के अंडर आता है. ये ज्यादातर 90% आर्मी के अंडर और मिलिट्री के अंडर आता है. बहुत थोड़े बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं सिविलियंस, और सिविलियन जो फैसिलिटीज हैं उनका जो सेफ्टी और सिक्योरिटी बिल्कुल अंडर एसपीडी, अंडर बेसिकली मिलिट्री अंडर है. उनका खाली डिफरेंस मिलिट्री और सिविल इंस्टॉलेशंस का एक ही है कि उनका सेपरेट सेक्शन स्पेशल प्लानिंग डिवीजन के ग्रुप के अंदर हेडक्वार्टर में है. मतलब उनका हेडक्वार्टर का जो सिलेक्शन है, जैसे आप देख सकते हैं कहूटा रिसर्च लेबोरेटरी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इनका जो सेक्शन के जो देखभाल करने वाले हेड्स हैं वो अलग हैं, पर ग्राउंड में जो देखभाल करने वाले हैं उनका डिफेंस का, उनका प्रोटेक्शन का, एक्चुअली 3 लेयर का प्रोटेक्शन होता है. वो सब बेसिकली पैरा मिलिट्री फोर्सेस, स्पेशलाइज्ड फोर्सेस वो देखभाल करते हैं. Right. So, okay. Besides this, there is also this. ये बेसिकली ये दर्शाता है कि ये बहुत इन्होंने बारीकी से प्लानिंग किया है, प्रिपरेशन किया है, और बहुत साल से एक न्यूक्लियर पावर हैं. तो उन्होंने हमको उनको इतना तो मानना पड़ेगा कि एज अ पावर विच मे हैव स्पोकन अ लॉट ऑफ, दे हैव नोन टू स्पीक अ लॉट ऑफ ब्लफ, दे आर नोन टू टॉक in a very undiplomatic and an aggressive manner, but at the same time on the ground they have put the procedures and the structures in place so that their nuclear assets are kept safe and secure so that they can use it properly. Because हमसे ज्यादा उनको ज्यादा फिक्र है कि with so many terrorist organizations, अभी आगे हम डिस्कस जरूर करेंगे, उनको खुद डर है कि ये जो इनसाइडर्स हैं, स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जो थ्रेट हैं उनसे बचाव करने के लिए द एस्टैब्लिशमेंट, मिक्स ऑफ बोथ द गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री, जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको बिल्कुल उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में बनाया हुआ है. राइट. सो जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है ये जो जितने इनके न्यूक्लियर मटेरियल है, फिसाइल मटेरियल, और इनका न्यूक्लियर वॉरहेड्स या न्यूक्लियर weaponized thing, so that's a threat. So there's a non-traditional, non-military threat coming out of this whole story, that they can be taken away by terrorists and used within. एक दूसरा, that fissile material can be stolen, that's the vulnerability, and used somewhere else, and made into a backpack material and backpack bomb and used. And the third, a hot-headed core commander might trigger a nuclear conflagration in case इनका जो political instability, अंदरूनी political instability is at stake. Am I right? If there is, do you visualize a third threat coming out? मैं आपका एंडोर्स करना चाहता हूं जो आप बोल रहे हैं, उसके ऊपर ये ऐड करना चाहता हूं, बेशक ये जो प्रोसीजर्स हैं बहुत फेयरली वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, पर एक चीज आपको पता होना चाहिए, जब बिल्कुल स्टेबिलिटी था और इंटरनल टर्मोइल एटलीस्ट इन द न्यूक्लियर फील्ड किसी ने उसके ऊपर ज्यादा जिक्र नहीं किया, तब भी जो बाकी बिग पावर्स हैं और उनके जो ओन जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है उनको घबराहट होती थी एक इन 2-3 चीजों में. वो 2-3 चीजें थी, the integrity and the professionalism of the security apparatus, and secondly the ability of quickly subverting the insider man. ये एक peculiar problem है. Yeah, so what you're trying to say is that this whole इनका जो जितना system है इनका vulnerabilities हैं. बिल्कुल. So the vulnerabilities
could be of, I mean, civil facilities के भी हो सकते हैं, military facilities के भी हो सकते हैं, बिल्कुल and they could be physical vulnerability and human vulnerability. बिल्कुल। Right. और इसमें एक्सपैंड ये भी कर सकते हैं, जो न्यूक्लियर वेपन, जैसे जनरल शंकर तो डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी भी रह चुके हैं, हम सबको मालूम है कि ये नहीं है कि न्यूक्लियर वॉर हेड हमारे पास हाथ में आ गया तो उसको डेटोनेट Fire या कर सकते उसको एक्सप्लोड कर सकते हैं। उसमें जो सेफ्टी मैकेनिज्म्स हैं एक नॉर्मल आर्टिलरी शेल में है, इसमें तो बहुत ज्यादा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मैकेनिज्म इज दिस electronic code and so many other locks and systems by which it cannot be exploded. So जैसे आपने बोला, but at the same time यहाँ इंटरनल और इनसाइडर इंफॉर्मेशन बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी बहुत सारा इंफॉर्मेशन अभी पूरा अभी यहाँ अभी जब जो हो रहा है, फिर भी देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ म्यूटिनी विद इन द आर्मी। जो इतना पुरानी ब्रिटिश आर्मी है, म्यूटिनी की बात हो रही है, बहुत सारे ऑफिसर्स को सस्पेंड और उनको जो रिमूव फ्रॉम सर्विस हुआ है, who have refused to follow orders stating that it is not a moral or a correct order। इस तरह से इनमें भी होगा, क्योंकि अल्टीमेटली द प्रोटेक्शन फोर्स इज अ मिक्स ऑफ आर्मी एंड स्पेशलिस्ट who are guarding all this। Apart from that, please don't forget जो सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल साइंटिस्ट हैं और जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर रहे हैं और कहूटा के अंदर हैं, चश्मा के अंदर हैं, इस्लामाबाद में जो फिसाइल मटेरियल कॉम्प्लेक्स है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जिसमें वॉरहेड्स बनते हैं, दे आर ऑल सस्पेक्ट टू सबवर्शन। Yeah. एंड सबवर्शन इज दैट नॉट ओनली कैन दे नॉट ओनली कि वो ये हथियार या जो फिसाइल मटेरियल बाहर ले जा सकते हैं, वो फिजिकल थेफ्ट है। ये जो पूरी कोड है, डिजाइन है, क्या कैसे बनाना है, वो जो सीक्रेसी है जिसकी एक्चुअली महत्व ज्यादा है, जिसके लिए शायद हो सकता है बाहर के देश, अंदरूनी देश, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने के लिए तैयार हैं, और ये प्रोलिफरेशन हो गया तो ये आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो सकता है। तो इसका मतलब बहुत हल्की बात कर रहे हैं, बट इट हैज गॉट इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस। या तो आप ये बोल रहे हो, लाइक आई जस्ट वांट टू ऐड व्हाट यू हैव सेड। जब वो एक्यू कान का जो नेटवर्क था, और उन दिनों में भी ये डर था कि दे माइट एंड, खास करके व्हेन वो जो रेडिकलिज्म का लहर चला पाकिस्तान में शुरुआत में, ये भी रिपोर्ट्स आए हैं कि कुछ लोग इनके लेबोरेटरीज में साइंटिस्ट रेडिकलाइज थे, और जो रेडिकल एलिमेंट्स वो उनका सबका डर यही था कि ये फिसाइल मटेरियल को स्मगल कर सकते हैं, या डिजाइन को स्मगल कर सकते हैं, या पार्ट्स को स्मगल कर सकते हैं। आपने जो बोला सही है कि वॉरहेड को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वॉरहेड को कहीं जाके आप फोड़ भी नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। पर बाकी जो, क्योंकि वॉरहेड के अंदर जैसे एक रॉकेट का वॉरहेड है, जब तक वो रॉकेट ना फायर हो वो वॉरहेड भी चलता नहीं है, राइट? बट someone who knows the technology can do something with it। फिसाइल मटेरियल के साथ वो बैकपैक बॉम्ब बना सकते हैं। तो जब यहाँ के लोग में रोग एलिमेंट्स होंगे, टेरर रेडिकल एलिमेंट्स होंगे, और पॉलिटिकली मोटिवेटेड एलिमेंट्स हो सकते हैं, और जैसे आपने बोला सबवर्स्ड एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो इसका पूरा सिस्टम के ऊपर अभी उंगली उठता है। And मैं इसके ऊपर और थोड़ा बोलता था। पहले तो थोड़ा सा इन फेवर इन द सेंस कि ये कंटिजेंसी, क्योंकि जो चोर होता है उसको मालूम होता है कि उनकी जो वीकनेस है वो क्या है। तो पाकिस्तान जो अपने जो ह्यूमन प्रोडक्ट है, उनकी जो वल्नरेबिलिटीज है, बेसिकली बिकॉज ऑफ फंडामेंटलिज्म एंड सो मेनी सोशल प्रॉब्लम्स, उनको मालूम है बहुत सारे लोग लालची हो सकते हैं फॉर मनी, फॉर इंटेलिजेंस, फॉर वुमेन, and for just some cause, Islamic jihad. Because of that, their scrutiny level has been divided separately for civilians and for service personnel. No, I'll just add one more thing. No, one more thing. You see, देखिए अभी जो कोर कमांडर के घर के ऊपर अटैक हुआ, सारे भाग गए, और उनके जीएचक्यू के ऊपर अटैक हुआ, किसी ने वो क्यों? वो अंदरूनी मेल मिलाप था, नहीं तो कोई नहीं भागता। तो वही काम यहाँ भी होता है। यही मैं बोल रहा हूँ, ये तो प्रोसीजर है, ये कर रहे हैं। उनका जो मॉनिटरिंग पहले रिक्रूटमेंट के लिए, और हर 3 महीने उनका जो बैंक बैलेंस है, उनकी फैमिली है, सब कुछ।
But having said that, अभी उनकी priorities is to stabilize the nation, and in ये इनके पास ये सब हर चीज का ये spontaneous है. बहुत सारे लोगों को spontaneous emotions आता है. उन्होंने पहले जो क्या बोलते हैं फेंस सिटर्स हैं, जो थोड़ा बहुत टेररिस्ट को मदद करना चाहते हैं या दूसरे पार्टी को करना चाहते हैं या पैसे के लालच में, when the system is weak, this is the time for us to be extra careful, and this is the time when they are not careful. The time when they should be the weak, they should be the strongest and most alert, is the time when they are not in a position to be alert, because the people who are securing all these things may not even be reporting to duty. Some have been absconded. Some may have got subverted. Some may actually be consorting to somehow create a situation for their personal gain or for some ulterior motive or for terrorist organization. मैं आपको बताना चाहता हूँ, especially last 3 years में जो the Al-Qaeda, Taliban और बाकी TTP ये सब थोड़े extra initiative or there has been material emanating from them which has been confirmed from. There is a US int officer, I forget his name now, I've noted it down. If I find it, I'll tell you, who has said that he has given a warning that there is a renewed interest in getting access to nuclear technology and nuclear weapons and fissile material. This is, I'm talking 3 years ago, where there is renewed interest. This is a time for exploitation. So I think it goes without saying that this is the time that, firstly, we sincerely hope and pray that the powers be within the army. The head of the strategic planning group is a lieutenant general. You must also, and the National Command Authority. Right now, there is nobody except possibly even the chief. We don't know now whether he's powerful or not. So actually, everything rests with the strategic planning group. Now that I'm discussing, it occurs to me that classically the National Command Authority is dissolved. There is nobody. The strategic planning division is the structure which is now safeguarding that, which is porous, which is liable for subversion, which is being attacked in a very administrative way also, where those people have their families in Lahore and Karachi, whether they will all rush there to protect their families or because they belong to somebody else. So these are things which nobody is talking about. One can hope that their army training and their passion for protecting these assets for the nation is so strong that it remains safe, and we can only pray for that. Yeah, that so you have आपने पूरा इनके जो vulnerabilities हैं आपने क्लियर बता दिया, राइट? अभी लेट्स सी इसके फिक्स क्या है. इससे पहले कि हम ये फिक्स के ऊपर जाएं, किसके इंटरेस्ट है? What are the interests of, say, China, USA, Russia? I will say that firstly, I only hope the most interested party is the policy makers and the powers that be in Pakistan. Apart from that, there are 3 countries who immediately are directly interested, and I'm sure, with keeping in mind their intelligence, surveillance, and radar and ground intelligence, they are already working overtime, more than 24/7. One is United States, because मैं एक सभी को ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, यानी कि जैसे आपको मालूम है, इंडिया और चाइना 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं जिन्होंने बोला है हम कभी भी दूसरे नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के ऊपर हमला नहीं करेंगे, हम कभी पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो हमारे ऊपर इस्तेमाल करेगा केमिकल और बायोलॉजिकल को मिला के हम इतना मैसिव बदला लेंगे या मैसिव रिटेलिएशन करेंगे कि दूसरा आदमी उसके हमारे फर्स्ट स्ट्राइक के लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा. उसके लिए सेकंड स्ट्राइक के जो वेपन्स हैं उसको कंजर्व करके सेफ रखना पड़ेगा, उसको अभी हमारे दायरे से ऊपर है. फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी की एक और बहुत बड़ी मुद्दा है जो बहुत लोग इसके ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी फर्स्ट स्ट्राइक वेपन कैपेबिलिटी 100% नहीं है. फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब है दुश्मन का या एडवर्सरी का हर एक वेपन और हर एक डिलीवरी सिस्टम के ऊपर नजरअंदाज रखना. तकरीबन उनको मालूम होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले किसको मारेंगे वो, जब यदि अटैक करेंगे भी तो सबसे पहले दुश्मन के न्यूक्लियर हथियार और डिलीवरी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेंगे, नहीं तो दूसरे जो देश है
एक बार अटैक So, होने के बाद वो उसके वेपन को करेंगे. no, तो no, यूएस must be monitoring. wait, sir. Let's not drift into that. Let's No, look I'm at bringing the, that US now will be monitoring every yeah, facility, yeah, I every agree with you delivery there. system in Pakistan. Okay, so there That is, is the point I'm making. yeah, the major point you're making is ये अभी जो short term fix है ये. I can still consider this whole story as a short term fix. Is a short term fix में the USA, China, IEAA, and even Russia to some extent will बिल्कुल be monitoring the whole story. एक तो ये political developments track करते होंगे कि बिल्कुल someone has to take a call कि कब you have to step in, बिल्कुल. right? So that's a call. That's a geopolitical. इसमें भी दो कंटिजेंसी हैं. एक तो हालात इतने खराब हो जाएं और कोई खबर मिले कि कुछ हो रहा है या कुछ हो गया है. हाँ. दूसरा इसके बाद का भी एक कंटिजेंसी है कि भाई इनके ऊपर हम कॉन्फिडेंस नहीं है. पूरी दुनिया मिलके अंडर द एजीज ऑफ यूएसए एंड यूनाइटेड नेशंस एंड अदर मेजर पावर्स वी मस्ट डू समथिंग अबाउट. Okay. So short term thing कि monitor करो. अगर कुछ हादसा हो गया तो उसके ऊपर रिएक्ट करो. अगर उसका फिसाइल मटेरियल या किसी का चोरी का अगर इनको खबर मिल गया तो उसको मॉनिटर करो सैटेलाइट के जरिए ये वगैरह वगैरह, राइट. सो दैट इज द डिप्लोमेटिक चैनल्स बहुत काम आएंगे इसमें, राइट. एंड यू हैव टू कीप ट्रैक एंड साइमल्टेनियसली जैसे आपने बोला कि नेशनल कमांड अथॉरिटी में कोई नहीं है, एसपीडी में कोई नहीं है, कहीं ना कहीं कांटेक्ट होना पड़ेगा कि भाई आप जरा सतर्क रहो, आपके यहाँ हमें खबर नहीं मिलना चाहिए कुछ हो रहा है. सो इंटर apparatus also would be working over time, जो आपने बोल दिया. मैं ये लॉन्ग टर्म मॉडल आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. देखिए अभी बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान का जो हालत है वो सुधरने वाला नहीं है और ये नीचे होता जाएगा. और आई डोंट सी that Pakistan will come out of this for the next 10 to 15 years, क्योंकि इकोनॉमिकली इनका सब कुछ प्रॉब्लम है. ना मैन्युफैक्चरिंग है, ना प्रोडक्टिविटी है, ना पानी है इनके पास, ना फूड सिक्योरिटी है, आबादी बढ़ रहा है और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है इनके अंदर, क्योंकि इनके अंदर रेडिकलिज्म है. ये मैं हजार आपको रीजंस दे सकता हूँ क्यों ये बढ़ेंगे नहीं. अगर ये नहीं बढ़ेंगे, नहीं ऊपर आएंगे, क्या should Pakistan have nuclear weapons? Why don't we use the Ukraine model and denuclearize them? So why didn't we talk about that? It's a जनरल शंकर आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रपोजल दिया है, थॉट है. इसमें इमीडिएटली मेरे दो तीन ख्याल आते हैं, थोड़ी एस्पेक्ट्स आते हैं. एक तो सब मानेंगे कि पाकिस्तान will try its level best or even will be willing to go through very adverse geopolitical situations and threats so that it doesn't give up its weapons. But if the international society gets together, and here is a very interesting point which occurred to me when you were bringing this out. ये एक बहुत अच्छा मौका है जब for at least in current times when the United States, China and Russia actually cooperate with each other to force the Pakistan for something like having an Ukraine deal. Because अकेले में बड़ा मुश्किल मेरे को लग रहा है. But China is also understands कि ये पाकिस्तान out of control civil wars type situation हो गया, तो they are as much threatened as India because of Xinjiang and because of so many other factors. We will not go into that in this discussion. He is as much worried and apprehensive of a loose cannon or these rogue elements or rogue fissile material roaming around all over the world, especially in Afghanistan, Pakistan, and many of these areas. So there is a high probability when all of them get together and are virtually certain that things, at least for the immediate future and middle future, will be a direct threat to the international and global security and global what is that called, living, then it will not no longer, in fact the situation may present itself, it will no longer be considered an outlandish idea. So your idea
doesn't appear outlandish if within the next 10 days things deteriorate. There are rumors of some attacks on nuclear facilities. There are rumors of a leakage of fissile material. There are rumors of, not rumors, and also hard evidence, because you cannot deny that both China, which has a direct stake in all the activities of the terrorist organizations, especially Islamic fundamentalism, both in Central Asian republics, in Pakistan and Afghanistan, they will have आप ही ने regular दिया shutdown. ये पहले इंसिडेंट भी हुए हैं, आप देखिए. हाँ, मैंने जैसे आपने ये स्लाइड दिखाया है, ये 4-5 स्लाइड मैंने तो खाली 4 नोट किए हैं. दे आर ऑल रिलेटेड टू न्यूक्लियर फैसिलिटीज एंड पर्सनल, and many of them I have not noted, which is more dangerous. Many of them are physical attacks. There have been reports of threatening, kidnapping families and others of these scientists to somehow get inputs from them, and it is all on record. It is available in the library of atomic scientists, in FAS, in many of the sites. If you go online, nothing is secret. No information is classified. So you feel that we have to go into a Ukraine model where Pakistan is given some option. Okay, you give up your nuclear weapons and we'll give you something else. As a strategist, but from India, but also as a person with a larger global perspective, given the current situation and the absolute breakdown of all verticals of diplomacy, social norms, security, the main structures within Pakistan, with no command and control or cohesiveness in sight, planning must start on taking what you said, immediate measures, and also we must start planning very seriously for the next step of the Ukraine model. So what does India do about this? Sorry? What does India do? India has to do something about it. No, I mean, should we go across to the international community and start telling them, or should we keep quiet? I have a feeling that we would have already done that. The world knows that we are a very responsible, mature nation, and also a very responsible nuclear nation. The world also knows that our arch rivalry, and the whole world has termed South Asia, especially India, Pakistan, as the most dangerous and likely conflict where a nuclear configuration is possible. So if that be the case, I think it is anybody's case. If India takes it, it will not be taken as a purely a move from the strategic viewpoint of India. If the world wants to avoid a nuclear conflagration, because let me tell you, the chances are certainly much higher now. Even right now, I had written a tweet that while rather than even looking very forcefully at the line of control and the IB, somebody had written we have to be very careful. Obviously, we must make sure that our hinterland is very safe because of some rogue strikes. If that happens, there is also a possibility that maybe rogue elements within the army, within the organization, within SPD, within those units which are actually manning these Hataf regiments, within the strategic force, who can do something unimaginable. Yeah. So fine. I think we've covered a whole lot of things, sir. We'll take a few questions before we thing. I'll not take too many questions, but I will take a few. Right. Jack Sparrow says, sir, who must India negotiate in Pakistan during a rising nuclear conflict? Political power and army is at disarray. That's the problem. आज का problem यही है, but take a shot at it, sir. When there is a rising nuclear conflict, there is actually no negotiation. Yeah. I mean, now that's a cut and dry answer. Yeah, then it's a nuclear war, and if it involves any more people, it is Armageddon. But having said that, obviously the nuclear trigger, the holding of the nuclear weapons, and the launching of nuclear weapons is the armed forces. So at that point in time, they are in charge. And if there is no government, maybe first and foremost, I have a strong feeling this is a little bit of an extra hypothetical question. I feel that much before this can happen,
the Russians, the Chinese, and others are certainly going to step in. And in no uncertain terms, even India will say, like, I'll read something very interesting. Ashley Tellis, in his end summary, he talks about India. He says that India should not get over hyped about the nuclear threat. But he says at the end of the day, India is a relatively satisfied state and a relatively secure state. That is, for all the challenges that it has vis a vis China and Pakistan, still India has mass on its side. It is a huge country and it is not a pushover and it has political ambitions that are relatively conservative. What I'm going to say is, in such a situation, the world will certainly be on the side which has not initiated it with our No, no, sir, history. sir, 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 sir. Ek minute. I think I we have to, diverted. no, we have to turn this question around. The question is not in case of a nuclear war between India and China, or sorry, India and Pakistan. We have to see this question in the context of the current situation. Whom do we talk to? If you go by the standard thing, you will have all this. But my view is that, like what you said, at this point itself, as the instability is getting in, we need to start talking to someone, whether it's a political authority or a military authority or a chap who's got his hands on thing. Some level, someone has to start talking. That's the point. That's a short point which I'm trying to make. We must talk, and communication in any situation, even when we are at war, like Ukraine and Russia, should be open. And Yeah. so, but we have historically never talked to the military authority as long as there is a civil government in force. So it Yeah, goes sir. without saying, if we want to talk to somebody, it will be the civil government. Yeah, But I have I a would. feeling, but I have a feeling that because of this such a major threat, which in a way we are helping them. We may help them with information, we may help them maybe with, we can help them with codes, we can help them with technology to safeguard their nuclear assets. So, Sir, the sir, Pakistan government may will I, have sir, may I, military sir? senior leaders. Yeah, may I, sir? May I, all the questions hereafter which come, I request you to give short answers, Okay. so that we can take more this thing. Okay. Right? Sorry. So it will be Yeah, a mixed team. I have a yeah, feeling okay, yeah, Pakistan will have military also people, and so yeah, our yeah, yeah. team Let's also get to will the mix. next one, sir. Okay. Is it true that Pakistan has no control over its nukes? The control is in the hands of US with the codes. Not true. Not true. Okay. So that's not there. They have their own, and in fact, Pakistan ने अपना कंट्रोल कभी नहीं देगा किसी को, क्योंकि उनका जो पाकिस्तान का जो power is derived from the nukes, and they will not part with it with anyone. Okay. Can India effectively denuclearize Pakistan by utilizing advanced technology, strategic planning, international cooperation, daring covert operation, high stakes negotiations? Uh, I think it's quite a complicated thing. That's what we've spoken of the whole evening. नहीं इसमें So, एक ही एग्जांपल है which will answer the question. Even America today, why are they so worried about North Korea? Because even America, with this technological superpower, with satellites, with everything, cannot guarantee that they will be able to take out every delivery system or warhead of in North Korea. yeah, And okay, so, while the combination works, there is no 100% guarantee. We cannot say that we will be able to do it. okay. How pragmatic is a Ukraine type denuclearization plan for Pakistan at the time of its inevitable implosion? As we have discussed, I feel it is one of the highly, with the precedents which has existed, it is a very highly pragmatic solution to a complex situation where guarantees are also given to Pakistan Yeah. Only thing by is the you powers. have to have complete monitoring, complete oversight, so that things can be put in under control at the earliest. And that actually, अगर आप देखेंगे तो it benefits both the international community and Pakistan also. Right. Next question: will Pakistan ever give up its nuclear weapons? Never. Right? Unless they have a lot of inducement in the alternative. Okay, will the West defang Pakistan of its nukes to prevent them falling into the wrong hands, or will they let it continue to remain a counterweight to India? What will be the role of Chinese in this? Very, very
Interesting Tricky question by question. Patari. मैं यही बोलना चाहता हूँ that it's a very transactional world. There are no friends. There are no permanent enemies or friends. There are only national interests. To answer this question is a very today's enemy, maybe tomorrow's friend. And in fact, that is the answer. If you analyze it further, everybody has got their interests and their groups based on the time and their mission and that period of alliances which is going around. It is undergoing a flux because of Ukraine. It's a very you can give an answer to this, but things will sort out itself based on this balance of power. Yeah, basically क्या है कि when the situation is going bad south very fast, then everyone's interest is involved, then people will start acting. That's the way I look at it, right? So till then we have to wait. Okay. Is it necessary to follow the established procedures and abide by international norms, or is it conceivable to denuclearize Pakistan using non-state actors? Look, the short answer is you can't, because their whole thing is quite vast. And non-state actors cannot do this business. This is a very technical job, right? Unless you understand technology, you cannot do anything. Okay, ask any truth that Americans could have the launch codes of Pak nukes. If this wasn't true, there isn't much stopping us crossing over and hoisting our flag there. That so might not be true. You answered the question yourself, John, so there's no much this thing. Okay, the last question, sir. Is it true that Pakistan keeps all its nuclear components separate in case of theft? Also, what are the chances of any sympathetic explosion of a nuclear device in Pakistan? Sympathetic explosions don't have in nuclear devices, okay? And they are pretty well guarded because, and they're all kept, components are kept separate, the codes are kept separate, the triggers are kept separate, the warheads are kept And separate, the even delivery. when they are kept together, for an example, in the nuclear silos which is being built in, 350 of them are being built in China in the last 3 years. The minimum separation, vertical separation between the silos is 3 kilometers. Just to give you even here, they will not be keeping them together in one shed or something. Yeah, there's no this thing, right? So I saw we have come to the end of the questions also. आज का जो जितना हमने बात किया about denuclearizing Pakistan, and we've spoken about Pakistan and nuclear thing, and due to the instability in Pakistan, ये this is not to suggest that you should go around defanging now Pakistan. सिर्फ हम ये सबको इतला करना चाहते हैं कि ये एक नौबत आ सकता है. अगर हालात पाकिस्तान के अंदर बिगड़ गया तो हमें सोच विचार करना पड़ेगा. मेरे को पता है ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा विचार विमर्श होता नहीं है खुले इन ओपन सोर्सेस, बट हम सबको सोचने की जरूरत है इसके बारे में. Right. So, your last words before we close up. No, thank you very much. I will only endorse जो जनरल शंकर ने बोला है. सब कुछ ओपन सोर्स से डिस्कस हुआ है, बेस्ड ऑन लॉजिक. ये एक सिचुएशन है जो कम लोग बात करते हैं और क्योंकि डर से नहीं बात कर सकते, बट मैं बिल्कुल सहमत हूँ जनरल शंकर के साथ कि इन दिस सिचुएशन, गिवन द सिक्योरिटी सिचुएशन, इंटरनल what is that called, disturbances within Pakistan, and the scope for the vulnerabilities to be exploited, I feel keeping a close watch on the nuclear assets of Pakistan is very much essential and very much essential, and is, I'm sure, being done. Yeah. So thanks a lot, and thanks a lot for sparing your valuable time for this talk. And I would thank all the viewers and wish everyone good evening and Jai Hind. Thank you. Thank you very much, Shankar. Always great talking and interacting with you. Thank you, sir. I'm sorry if I got carried away a little bit.